Hello everyone. So another day where another match India dominates, and this time it was a good contest between bat and ball. India versus Pakistan. I'm talking about. So in the panels we have today got on my left hand side Ayan Chatterjee and below Anup Konnur sir and Ayush Shekhar. So first of all, शाहिद शेखर मतलब किस तरीके के परफॉर्मेंस है। बॉलिंग में अच्छी हुई नहीं थी बॉलिंग स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में बॉलर्स का कमबैक हुआ। जो टारगेट 200 के आसपास होना चाहिए था वो 20 से 25 रन पीछे रह गया। सो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अदर कह सकते हैं हम। हेलो सभी को। जब इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग लेने का जो फैसला लिया था, उस वक्त ऐसा लगा कि हाँ, पिछले मैच जो ग्रुप स्टेज वाला था वही रिपीट होते हुआ दिख रहा है, पर ऐसा हुआ नहीं। आज पाकिस्तान ने अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज किया। जो उनका फुल टाइम ओपनर है साइम अयूब, जो हमेशा 3 अंडे दे चुका था इस एशिया कप में, वो आज नंबर 3 पे है। और जिसकी असल जगह बनती थी फकर जमान, जो पॉलिटिक्स करके बाबर रिजवान, कि उसको नंबर 3 पे 4 पे, आज वो अपने असली जगह पे एक लंबे समय के बाद आया। ठीक ठाक खेला, अच्छी बात है, फरहान भी ठीक ठाक खेला। लेकिन जैसे ही विकेट गिरा उनका पहला, फिर वहां कंट्रोवर्सी चालू हुआ। अरे बॉल टिप खा के गया। अरे भाई, जूम करके दिखाया जा रहा है कि जो कीपर का हाथ है वो एकदम नीचे है, और बॉल उसके उसके ग्लव्स के हिस्से को टच कर रहा है। कैचेस भी बहुत छूटे। अगर उस वक्त पकड़ लिए जाते, चाहे अभिषेक शर्मा से वो थर्ड मैन के टाइप छूटा हो, चाहे शॉर्ट फाइन लेग पे इसका आयुब का छूटा हो, अगर वो सब कैच पकड़े जाते तो पाकिस्तान का इतना बड़ा टोटल नहीं बनता, 170। अब आते हैं उनकी भारतीय टीम की बैटिंग में। जब अभिषेक शर्मा ने शॉर्ट पिच बॉल पर फाइन लेग पे छक्का मारा, तब वो इंडिया ने एक माइंडसेट बना लिया था कि आज कुछ भी हो जाए, हमने आज इनको कहीं से भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि बैक एंड में हमारे साथ बहुत इन लोगों ने बदमाशियां की, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल किया, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोले, कप्तान के बारे में उल्टा सीधा बोला। आज इनको हराना बहुत जरूरी था, और हराया भी। लेकिन जो मैच 13-14 ओवर में खत्म हो सकता था, वो रगड़ते घसीटते आप 17 ओवर तक चले गए। यस, चार केसेस ड्रॉप हुए थे आज इंडिया की तरफ से। फील्डिंग स्लॉपी थी, मिसफील्ड भी बहुत हुए थे। सो अनूप सर, लाइक इट वाज अ गुड गेम आई वुड से। इंडिया पाकिस्तान, लाइक द फर्स्ट राउंड of India Pakistan was one set. This time at least they competed. Abhishek Sharma's catch was also dropped in the during the run chase. It was a tough one, but it should have been taken there. So it was a finally what Pakistan is speaking. We can say if India Pakistan goes into the final, we might see another blockbuster. Still a long way to go. You have to take on Abhishek Sharma's batting, freelancer, the stroke play and everything. He is on a roll. Like there is one way to get him out is by bowling very straight line length, middle and leg stump, hard line, good length, Yorker. That's it. He gives you opportunity, one or two opportunities. You have to cash in on that. What's your take, sir? That first of all means it's a laughable comment, though you think, as Varad sir thinks like Pakistan competed. Competed, this word today seems laughable for Pakistan. And I have my valid reasons for that. No offense to Varad sir, but it's like, yes, India do won the toss. The pitch was such that today's pitch, nothing, there were no demons. And India Captain Surya Kumar, when Pakistan was batting for a moment, I thought like, yeah, the captain the decision गलत हो गया. Should India would have batted first because ऐसे belter wicket थी, India would have easily scored about 200 220 runs versus Pakistani bowling. But ठीक है, considering the dew factor and yesterday how Sri Lanka and Bangladesh won in the second end, also dew was there, so batting became easier. So considering all these factors, Surya took batting, which was fine. Bowling, yes, India made huge mistakes, like zero on zero. Saib Jada Farhan was supposed to go into the pavilion, but Abhishek Sharma dropped a catch at third man. Then Adin Saim Ayub, who was promoted to the third spot today, demoted, sorry. His dolly was dropped by Kuldeep Yadav.
Then Sahibzada was dropped on 35. So India had their fair chances of drop catches today, but I won't defend them. But there is some technical issues in Dubai ground as well, because the rings of fire which is there in the light when all the lights are on, when the ball goes up high in the air, for some time the ball is not visible to the players at all also. एंड इट डायरेक्टली अगर ऊपर से बॉल झटके से नीचे आया तो अचानक अपने ऊपर बॉल आ रहा है, ऐसा भी फील हो रहा है. फर्दर लीव असाइड कुलदीप यादव catch, it was an easy catch, but apart from that, the catch which Abhishek Sharma dropped, it was directly he was into directly into the range of fire. So it might be not defending that these catches should be taken at this level, but it's like हो जाता है. But saying so, Pakistan, yeah, they had a solid start in the power play, 55 for 1 they were in the power play. And Adin Sahibzada Farhan made most of the use of his given lifelines, and he made a solid half century. But exactly the portion where India won the match was the portion from 10 to 16 overs. Power play, first 10 overs, Pakistan, okay, you batted well, you did well. You are 91 for 1 after first 91 for 1 after first 10 overs. You were supposed to not put the pedal off the accelerator. You उधर से तो ज्यादा boom करते. You should have gone nearer to 200 or past 200. But what happened actually? After from 11 to 16, Pakistan only made 30 runs. Pakistan only made 30 runs and lost some 3 wickets. So as a result, what happened? They lost all the momentum. The new batter coming in, ऐसा है दुबई के पिच में अच्छा है ये, पर इसके लिए जो बैटर सेट है उसको अंतर गया, तो वो पिच अच्छा सेट बैटर थे, नए बैटर आने के बाद टाइम लगता है एडजस्ट होने में. एंड पाकिस्तान अगेन मेड अ ह्यूज मिस्टेक इन, आई डोंट नो व्हाट गोइंग इन माइक हेसन्स हेड. He is always making the bundle in the making the bat in order है. Why not मोहम्मद हैरिस? इतना अच्छा स्कोर हुआ था 91, तो विकेट गिरने जब मोहम्मद हैरिस तो ऊपर भेज देता, हुसैन तलक तो क्यों भेजा? वैसे भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाया वो. सो बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं आज पाकिस्तान में. एंड इंडिया, दो इट वाज 171, लोगों तो लगता है कि हाँ राइवलरी चालू हो गई एंड बहुत बड़ा टारगेट दिया ये दिया, बट सीइंग द इंडियन बैटिंग लाइनअप, एंड देयर वाज वन मास्टर स्ट्रोक इन कैप्टनसी फ्रॉम सूर्य कुमार यादव एज वेल, दैट जब उसको देता कि बुमराह इज गोइंग टू क्लीनर, सर बुमराह की गलती नहीं है, वन ऑफ डे सभी तो होता है, और आज बुमराह ने ज्यादा लेंथ बॉल डाले, जब बॉल पे टप्पा पड़ते बॉल बैट पे अच्छा आ रहा था, तब बैट्समैन वाज गेटिंग इट इजियर टू हिट बाउंड्रीज फॉर फन विच दे डिड. बट जब सूर्य कुमार यादव रियलाइज्ड इतनी विकेट्स नहीं दे रहे, ही इंट्रोड्यूस्ड हिज सिक्स बॉलिंग वेपन. India normally bowls with 5 bowlers, but today he introduced Shivam Dube, and that did the trick because Shivam Dube paid back Pakistani with his 2 wicket haul. And what happened with introduction of Shivam Dube? जैसे wicket गिरी, Pakistan went on back foot. वो इतने डर गए थे, they were not able to hit the aerial shots for next 30 balls. They didn't hit a boundary. So it's like aerial shot because वो डर रही थी कई बॉल ऊपर चली जाएगी तो कैच ले लेंगे इंडियन. तो इस हिसाब से लास्ट 4 ओवर नो डाउट दे फिर आते उन्होंने 52 रन्स बनाए. बट जो मिडल ओवर्स का फेस था उधर वापस से जो बैकफुट पे गए वहां वो मैच आ रहे. एंड सेइंग अबाउट इंडियन बॉलिंग, सॉरी इंडियन बैटिंग, the bashin which actually Shubman Gill and Abhishek Sharma gave proper T20 lessons to a number ranked team in the world, the number 7th ranked team in the world. The batting कैसी करनी है. First ball six to Shaheen Afridi, and you call him Shaheen Afridi, the face of Pakistan. ईगल है, ये है, कबूतर बनाते रहता है उसको एशिया कप में. अभिषेक शर्मा ने पहले बॉल पे उसने सिक्स मार दिया. मतलब ही हैज, यू माइट से अभिषेक शर्मा हैज एलिवेटेड हिमसेल्फ अप. पहले मैच में, प्रीवियस मैच में पहली बॉल पे तो 4 मारा था, उतनी इज्जत रहती थी. आज उतनी भी इज्जत नहीं रहती, पहली बॉल पे सीधा सिक्स मार दिया. Though his catch was left, but just see the difference. Shubman Gill, अभी तक सब चिल्ला रहे थे, Shubman Gill was criticized for not performing well because he has came in
place of many players who deserve to be a part of Asia Cup, like Shreyash Iyer, Yashasvi Jaisa. But what Shubman Gill did in 69 runs scored in the power play, Shubman Gill was more fast than Abhishek Sharma. He was on 31. Abhishek was some lingering around 25, which afterwards Abhishek took over and hit a majestic 74. और पहले 10 ओवर में 105, मतलब हमने आधा मैच उधर ही खत्म कर दिया था. एंड सेइन सो पाकिस्तान का ऐसा अनप्रेडिक्टेबिलिटी आया थी. आज बैटिंग में अच्छा किया तो आज बॉलिंग बहुत खराब किया. व्हेन व्हेन यू हैव हुसैन तलत हु इज अ ऑलराउंडर, यू हैव मोहम्मद नवाज हु इज अ ऑलराउंडर. आपने मोहम्मद नवाज तो बॉलिंग ही नहीं दी. ये कौन सी प्लानिंग दे. दैट्स पथेटिक कैप्टनसी ऑफ सलमान अली आदा. एंड सलमान अली आदा तो कैप्टनशिप मतलब जो मिली है, आई डोंट थिंक दिस दैट डिजर्व टू बी अ कैप्टन, बिकॉज खुद के रन्स तो नहीं आ रहे. खुद टेस्ट मैच जैसे क्रिकेट खेल रहा है. आज भी टेस्ट मैच जैसे ही खेला वो. जब मारने की जरूरत थी तब वो नहीं. उससे अच्छा वो शाहीन अफरीदी तो मतलब एक ऑप्शन होता है T20 में, जो आईपीएल में भी अश्विन ने दिया था कि रिटायर्ड हट हो जाओ, जो मारने वाला है वो आ जाओ. वो इससे अच्छा वो शाहीन अफरीदी तो भेज देता. वो 2-3 छक्के मारते स्कोर 180-85 तक पहुंचा देता. दैट वुडंट बी हैव इनफ. इंडिया did have few hiccups after the fall of शुभमन गिल, क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो 11 नंबर पे बैठे ओमान के साथ मजे लिया, आज उसको पटता पड़ा थी. ही वॉज बॉल अच्छा था, पर वो अपना नॉर्मल शॉट मारने चला गया. बॉल शॉट ने दिशा बदल दी एंड ही वाज आउट ऑन डर. बट ठीक है, संजू सैमसन तो वो प्रैक्टिस आज थोड़ी काम आई. मतलब जो जितना भी स्टे था, ही लुक कॉन्फिडेंट. एंड आफ्टरवर्ड तिलक वर्मा ही इज इन अनदर लेवल ऑफ फॉर्म, क्योंकि वो तो कंसिस्टेंट रन मार रहा है. आज 19 बॉल 30 मारे. इवन हार्दिक पांड्या पहली बॉल पे 4 मारते. हार्दिक पांड्या शोड सम ग्लिम्स. सो चेज वॉट एक्चुअली गॉट ओवर इन द फर्स्ट 10 ओवर्स फॉर इंडिया. उसके बाद सिर्फ फॉर्मेलिटी थी जो बाकी के बैट्समैन ने करवा दी. बट सेइंग सो, इंडिया नीड्स टू बी वेरी अबाउट देयर फील्डिंग गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आधे जाते ऐसे जो लैप्सेस अदर हो, इफ going Yes. forward such lapses happens, it would be very dangerous for team India, because India can afford to lose Asia Cup now from this position. That's my overall take on the whole match. It's like India won on the brilliance of batting from Abhishek and Shubman Gill. Hands off. दो पंजाबी मुंडे आज बल्ले बल्ले कर दी. But we should not forget that no team has reached the final yet. You have to wait and win at least one match, Sri Lanka or Bangladesh. Bangladesh both are playing very good cricket. So Ayan, as I said, like Abhishek Sharma, if his catch was taken at the leg side fielder, then India might have been in a spot of bother. And also Shubman Gill played a second fielder. It was also good knock. Like, which type of weakness do you think that other teams can exploit? As of now, there's only 1% weakness. That is, I would say the bowling, because today India's bowling got highlighted. Bumrah was taken to the cleaners. Varun Chakravarti, they played him out. Kuldeep also they played him out. Akshar also they played him out. Indian team also isn't invincible. Like Sri Lanka can defeat India, to be precisely. There's no weakness as such as far as India is concerned. If at all weakness, I think Anup sir already pointed it out, is the fielding. The fielding they need to be wary about. I mean, you cannot drop so many catches today. I think they dropped 4 catches or 5 catches today, which was very unacceptable. And that really allowed Pakistan to get, yes, they've got away with a victory, but they need to be very wary of the catches. Weakness point of view, if I look at it, bowling was a bit off today. I think Jasprit Bumrah had an off day. Varun Chakravarti, they played him out. Kuldeep Yadav also similar thing. So I think, yeah, the bowling can be on a day they can go for runs, but I'm not too worried about it. And yes, anybody can beat anybody on the given day. You mentioned about Sri Lanka. Well, Sri Lanka first has to beat Pakistan before even they can think of beating India. So that's another thing to be taken off. But I think today it was a good performance. It was a good game. If you look at the India-Pakistan game compared to the first round, it was a better game. Better. I won't say it was a close. I won't say it was a close game. I'll say it was a better game, better competition. But India were the better side, and the better side won in the end. I mean, Pakistan should have got to a bigger total from 91 for one. Should have got to 200, 190 at least. And then Yeah. yeah. So basically, that's that. I don't think there is any weakness as such. The weakness I'll say is basically India at their own weakness. They're their own enemy.
So they just need to be wary about complacency and catch fielding and ground fielding and dropping catches. That is the one thing they need to be worried about going forward in the next game. So let's see. India versus Pakistan. That second round is over, and we have to. And today, I mean, today there is no game. Everyone is getting a rest after a long weekend with the so matches. So everyone of you, take rest, all the viewers, because this weekend again there are chances that India versus Pakistan, like the round three, the decider round, we can have, and also Sri Lanka, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh. No, Sri Lanka is ho gaya. So a lot of exciting games coming up now. So thank you everyone. Good night. And if you like the video, then only share, like, and comment. We're not posting. We'll continue to do our analysis, pre-match, post-match analysis. And also today, England versus Ireland match also got washed out due to rain. So England's official sum No, up today of it also. happened. No, no, no. The match happened. The match In happened. third T20, England won the Oh series yeah, two yeah, yeah. zero. Yeah, no, and yes, I The thank you second for match was confirming. abandoned. Thank you for confirming. England's home season also ends with the Ireland. So thank you everyone. Bye. Bye.